He's just doing an outro. Max. You guys Hey, done? Tell chalo, me you chalo, spoke chalo. about Ashwin. Only. Only. Chalo, खुश है. अच्छा, चलो. Have fun, guys. Okay. Bye, bye, Bye. bye. TV umpire to director, we have a player review. Can we rock and roll, please? Hello, friends. Welcome to episode 135 of the Bits and Pieces podcast. Today, we have, along with myself, two other esteemed guests who have watched zilch cricket all week, all the way from London. We have Nishant Biswal, who will talk about all that is happening in the men's 100 that is taking the UK by storm. Welcome, Nishant, to the Thank you. podcast. Thank you very much. Very happy to be here. I haven't seen the 100 either. Just add that to the list of things I haven't seen. But we will talk about it. That's fine. That's always fine. And we had like Tim David move all the way from Singapore to Australia to play cricket. Similarly, we have Iman Pandey, who has moved all the way from Singapore to Bangalore to watch Ash Anna play and win the Tamil Nadu Premier League. Welcome, Iman, to the podcast. How does it feel staying up so late and recording this? Feels amazing. Really nice. And today I'm going to talk about Serious stuff. Bangladesh. Oh, sorry. I said serious stuff. Oh, it's a cricket Unlike podcast. So we'll talk about all the possible scenarios which could emerge if Bangladesh ever merged with India. Would we still play Jadeja? Would we still have Akshar Patel? Would we still have Shubham Dube? And all the possible scenarios. I think the most important question is, would we have Atar Ali Khan doing commentary for us instead of Sure. Sunil Gavaskar? For sure. Why else do we have TNPL for? Who will talk about Ashwin? No one has. Do you see mainstream media talking about Ashwin and his batting? That is why Do we you are see? Yes, we are here, and that is why Atar Ali Khan will come to India because Ashwin deserves that attention, which he's not getting. I think Atar Ali Khan will be able to do justice to Ashwin's contributions to cricket, especially batting, because bowling to so hota hai nahi. We can talk about batting. So, unlike earlier weeks, this has been a week which has been filled with a lot of cricketing action. You had England completing the honors against West Indies and sweeping that series, but still like pretty much rooted close to the bottom of the World Test Championship. You had India playing a couple of amazing one-day internationals against Sri Lanka, where some of India's notorious problems against spin came home to roost. But undoubtedly, I think the star attraction this week has been the Tamil Nadu Premier League, where Ash Anna has like single-handedly taken his franchise Dindigal Dragons to their maiden. क्या बोला? Sorry, sorry, I got confused. There is a restaurant chain, biryani chain in Bangalore, Dindigul Thalappakatti, something like that. Thalappakatti biryani. I thought you were talking about that. Amazing performance by Ash Anna to lead this franchise to victory. What has been incredible has been that like he started the tournament opening the innings for the franchise or maybe batting at one down. Then like midway through the tournament, he moved to the lower order, batted below Varun Chakravarti. Then towards the end of the tournament, he again moved to the top of the order, like batted, opened the innings, batted one down. And I think won 3 man of the match awards in a row, maybe at least 2 for sure. What do you think has been behind the renaissance of this man? He just continues to astound. Nobody is watching I see some TNPL, matter. and this guy is craving for attention. So he has to do outlandish rubbish like open the batting, go one down, go 10 down. Then obviously has to open the bowling. I thought
TNPL actually peaked when that other bowler tried to asanna him and run him out at the non-striker's end. And this guy is like, he doesn't know rules and all. He leaves statement next day. But it sort of gets better because his batting was off the charts. And then I think it peaked when he was, I think, hurling abuses at some batter out in the middle, and the camera was solely focused on him. And he was like full waving arms and gesticulating like a crazy fellow. What testiculating? Gesticulating. Okay, sorry. Testiculating see was a happening pattern. in pole vault in. I see a pattern with Ashanna going up to open or play one down, especially playing one down. And do you see the pattern if you watch India versus Sri Lanka's 2 one-days and see how India's middle order batsmen, specifically number 3, number 4, number 5, have played in this tournament? So Ashanna thought that there is no chance on earth that I can get back to the ODI team via my bowling. Why not try to get the slot of number 3? Virat anyway is playing really well against spin. You put off spin, you put leg spin, you put middle spin, you put straight spin, you put some spin. Virat will not play. Right? So Ashanna said, this is an opportunity for me. So this is my opportunity to play the next ODI World Cup. So, he used Dindigul Thalappakatti to, bolster his chance of becoming a middle order batsman, especially number 3 batsman for our ODI team. That's how I see it. No, but just to sum it all up. So Dindigul Dragons finished 4th on the table in the TNPL. So they just barely got through to the playoffs. And I remember they had a pretty dismal start to the tournament. Like the whole Ashanna opening one down experiment had bombed quite miserably early part of the tournament, which is why he pushed himself down the order. But they say cometh the hour, cometh the man. So the first eliminator against Chepauk Super Gillies, Ashanna bowling nothing to write home about, 4 overs, 33 runs, but batting one down, 57 runs from 35 balls at a strike rate of 163. So that was in the first eliminator. Then in the second qualifier against I Dream Tirupur Tamilans, they restricted them to 108. Ashanna finished with incredible bowling figures of 4 overs, 27 runs, 1 wicket. Went out to open the innings, 69 of 30 balls, finished the match in 11 overs. So this was after the game in which he said the performance had not been up to mark. We needed a crushing victory to really complete it. So there came the crushing victory. And the finals, they restricted Laika Kobe Kings, which probably the strongest team in the tournament, to 129 for 7. Ashanna bowling first change, 4 overs, 13 runs, economy of 3.25. And with the bat, a mature innings, 52 of 46 balls, taking them through and pretty much guiding the chase. So, superb effort by Ashanna. And I think what was also quite funny to watch is that of all people, Mr. Jamie sir came over to hand the trophy at the end basically, and Ashanna, while taking over the trophy, did a Jamie sir imitation of the trophy lift, and so that was quite nice to see. But it's wonderful. I have also taken Ashanna's case historically about how much he puts himself in front in the spotlight, etc. But just to go and play a franchise tournament like this, stay the course, and perform the way he did. Though I must admit, some of the highlights that I watched, the bowlers, I think I can do a better job than some of the bowlers who are competing basically. So yeah, but still, just to turn up day in and day out, quite incredible by Ravichandran Yeah, Ashwin. that's true. I actually found in your entire very extremely long slow monologue, I found some patterns again. Number one, which is why, and I have to bring that up, right?
First of all, if you see there is a Tamil connection in this franchise league, obviously all Tamilians are playing or Tamilian really remotely related to Tamil, right? I don't know. Which or everything is Tamilian because I'm a East Indian, right? So for me, everything down south is Tamilian. So yeah, so Tamilians are playing in this tournament. You look at how Mr. Virat Kohli is struggling against Tamil bowlers in Sri Lanka. They could be Sinhalese, but I will call them Tamilian because as I'm an East Indian, so for me everybody is Tamilian down south. So how Virat Kohli is struggling, whereas Ashanna he's just not struggling. Number one, number two, to the point that you just said, he turns up day in and day out. यार वो और क्या करता? अभी YouTube में तो नहीं करेगा ना. अभी क्या YouTube करेगा वो? किस बात पे? Oh, he will talk about the Bengalis playing, Lakshya Sen and Axel Sen. He can't talk about that. He does not know badminton. Maybe he can speak about it, but there are better bongs, like few more Sens who can talk about Axel Sen and Lakshya Sen. But तो हाँ मतलब I don't think he had anything to do other than go play some tournament, put some Dindigul Thalappakatti biryani, and yeah, and try and get a shot at playing the ODI World Cup next instead of Virat. I genuinely think Virat should let that position go to Ashwin. He is the deserving number 3 in the ODI team at this point in time. Hey, Iman, you talk about like TNPL being dominated by Tamils, etc. Hey, the second best bowler of Dindigul Dragons after Ashanna is only a Bengali. Da. Ooh, Varun Ashwin Bella. Chakravarti. Oh, Huh? Varun Chakravarti. Da. Yeah, so it is either a Bengali or a Tamilian. So for an East Indian, everybody down south is Tamilian. For a Tamilian, everybody whose name has to do with Chakravarti or Sen is a Bengali. You look at Kuldeep Sen, you look at Lakshya Sen, you look at Axel Sen, everybody is a Bengali. Don't you think Jason Roy is a Bengali? He is, right? there is this So- amazing quote he gave before the finals of the TNPL. Obviously, in the last IPL, I felt like I needed to widen my game and widen my horizons square of the wicket because I know I can hit the ball down the ground and I can use my Obviously feet. widened it. If you look at his bedex, it's pretty wide. It's only widening. Like the Thalappakatti biryani which is putting from Dindigul, right? It's only widening his bedex. So it's right. See, we have Rohit Sharma on top, number 1 batter. Number 2, some balance. We have Shubman Gill. Again, bedex has shrunk. Number 3, increase bedex. The balance gets maintained properly. Then you have Shubham Gube. Again, big. You have our real OG bedex who will come later in the order. So that balance somehow between 3 and 4, Virat is way too fit. It doesn't come in. We can't have Virat at now number 3 now. We needed somebody with big bedex. So Ashanna can come in with all the biryani that he has put in and the beautiful beard that he has created. By the way, the beard game, if you look at it, Virat loses there. man. He loses there as well. Ashanna is killing it. like कभी आधा यहाँ से कटा हुआ है, कभी नाक के साइड से काट के निकाला है, कभी कान के साइड से प्लस कर दिया है, कभी यहाँ माइनस, कभी यहाँ पे डॉट करते हुए डिवाइड, कभी एक्सपोनेंशियल बना रहा है, कभी लिमिट एक्सटेंडिंग इंफिनिटी कर रहा है. वो दाढ़ी पे ही कर रहा है सब कुछ खेल, फुल गेम दाढ़ी पे मैथमेटिक्स बना के. अपना वो हमारे ग्रुप में भी हैंक है, वो हैंक को तो बीट कर दिया उसने. एनपी हार्ट प्रॉब्लम क्या सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है अपने मुंह के ऊपर, यहाँ पे ऑन हिज फेस. बेसिकली इज लाइक द सूर्य कुमार यादव ऑफ फेशियल हेयर. कहीं पे भी मार सकता है बट सीधा नहीं रख सकता, मतलब नॉर्मल नहीं हो सकता. करेक्ट नहीं. Okay, just to complete that quote, do I want to explore other options is something I had to ask myself. So if I can ask that question and if I can find an answer, it gives me a new avenue to explore and keep myself interested in the game. तो वो Correct. इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए, खुद का इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए he is playing in the TNPL. Please, गौर फरमाएं. Correct. He's challenging himself. Like he's basically trying to go one up on Hardik Pandya. What did Hardik Pandya say? As a captain, I like to throw my team under the bus so that they find challenges. Ashwin is basically saying, I will not throw anybody under the bus. I will put challenges in front of myself and I'll keep performing. That's like a true leader. वो लीडर है वो. Like विराट भी ऐसे ही कहता है, पर विराट क्या कहता है कि वो सबको चैलेंज करता है. Again, I have to bring this Virat versus Ashwin
comparison because as a leader, Ashwin is far ahead of Virat even in this, right? He's constantly pushing himself, reinventing himself. Do you think Virat can ever come back into the Indian team as a bowler? No. But do you think Ashwin can come back tomorrow as a wicketkeeper? Yes. He can come back as a specialist fielder also. A fielder as well. He took a blinding catch also, apparently. Blinding only, हाँ blinding. हम सब अंधे हो गए थे उस टाइम पे. Sorry, दिख ही नहीं पा blinder. रहा था. Okay. I have to show you this clip. I don't know have you guys seen where one guy hits a six in TNPL and one fellow वो resting पैर से on उठा him. के नहीं, one fellow resting outside basically मतलब बॉल लेके चला गया, वो बोला वापस हाँ नहीं बॉल कर लेके चला गया वो. चला गया. देखा आपने? वो अश्विन का बहुत सही. जान पहचान बना होगा. What a tournament, man. It ball lands outside, guys resting in his field, enjoying the evening breeze. He's like, why ball landed in my field? I'll take ball, I'll not return it. Like peak Chennai uncle in apartment. What do you guys have to say about this amazing India versus Sri Lanka ODI series? So Sri Lanka did full comedy in the T20 series. Full comedy. Surya Kumar bowling, Rinku Singh bowling, Abhay Gurvilla bowling, कोई भी anybody, Dota Ganesh bowling, कोई बॉल डाल रहा है, श्रीलंका हार रहा है, कोई भी. Like I feel bad for Venkatesh Prasad now. He would have shown like shining armor. तो श्रीलंका उसमें हार गया, जीता वो मैच. इंडिया सेड बॉस ऐसे कैसे कर सकते हैं? हाउ कैन वी लेट श्रीलंका विन? हाउ कैन वी लेट श्रीलंका लूज? सॉरी, हाउ कैन वी डू दिस टू देम? उसके घर पे गए हैं, खेल रहे हैं वहां पे. तो रोहित शर्मा शुभमन गिल आके 100 रन मारता है 10-12 ओवर में. इंडिया चेजिंग 200-230, लाइक फाइंडिंग वेज टू लूज. लाइक कितना ब्रिलियंट मिडिल ऑर्डर है. एक बात बताओ, वो रिंकू सिंह और शिवम दुबे का पासपोर्ट चेंज हो गया था क्या? कुछ क्या क्या हुआ है? वो दुबे पहुंच गया गलती से क्या रिंकू सिंह की जगह? क्या हुआ वो? और संजू सैमसन का क्या हुआ? वो तमिलियन नहीं है, इसीलिए नहीं लिया उसको. Why was he not in the team? Why is he not playing? Answer, Varun Murali, you are aware of अजित अगरकर's thought process. तो उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस देखता है. और अचानक से अपना विकेट कीपर केएल राहुल क्यों बन गया? पंत को क्या हुआ? हाफ पैंट हो गया वो. Yeah, the fundamental change from the T20s to the ODIs is that from the T20s to the ODIs, this became a battle of equals basically. So from India we had Mohammad Siraj, and from Sri Lanka we had Mohammad Shiraz. So that suddenly changed the dynamics basically. I think the missing link in the T20 was Mohammad Shiraz was not there for Sri Lanka. Not there. So he came back for the ODIs basically. Well, the second ODI was like a photocopy of the first ODI basically. Well, Sri Lanka lost some early wickets, then put together a partnership like 100 odd per 5. Then this Vellalage comes from nowhere, scores runs, like then they get to 230, 240 odd. India come into bat. Rohit Sharma starts batting as if he's in T20 mode. Scores 50, 60 runs. India are like 100 for 1. Looks as if the match will be over in like 20 overs. And then the whole team collapses. This is what happened. Match got over in 20 overs. This is what happened in the second ODI as well. The only difference is that our great esteemed think tank, Gautam Gambhir and Abhishek Nair, did all sorts of Bharatanatyam with our batting lineup, including like Parani, Kabhi Washington Sundar was sent in at number 4, Kabhi Akshar Patel was sent in, Kabhi Shivam Dube was sent in at number 4. I think in the next match to keep the right hand left hand combination, they'll probably send Arshdeep Singh at number 4. He was also उसने भी तो ऑडिशन दिया था ना. अर्शदीप सिंह ने भी तो ऑडिशन किया था ना लास्ट बॉल में फर्स्ट ओडीआई में स्विंग मारने की, मतलब पूरा एकदम सो दैट ही कैन मिस इट ब्यूटीफुली एंड गेट एलबीडब्ल्यू. यार मुझे अभी एक चीज समझ में आ रहा है, ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन के चक्कर में ना मुझे लग रहा है एशन ने ये भी फिगर आउट कर लिया कि अगर मैं मिडिल हैंडेड बैट्समैन हो गया, सीधा ऐसा खड़ा हो जाऊंगा ना जाके बेटेक्स का साइड करते हुए, तो फिर मेरा चांस और ज्यादा है क्योंकि मैं कोई पोजीशन पे आ सकता हूँ, कोई भी आउट हो जाए.
देखो डिंडीगुल ड्रैगन के साथ डिंडीगुल थलापकट्टी में वो सीधा खड़ा हो रहा है आदमी। एमएच भी है वो, मिडिल हैंडेड बैट्समैन, कुछ और पकड़ के खड़ा हो, ठीक है। तो ना वो ऐसा वो गंभीर को चकमा दे रहा है कि गंभीर भाई क्या भेजोगे, लेफ्ट हैंड राइट हैंड मेरे को भेज दो, सब चलेगा, ऑल कॉम्बिनेशंस वर्क विद मी, मैं बीच पे खड़ा हूँ, कोई बात नहीं है। सीधा विकेट के सामने खड़ा होकर, जय महाराष्ट्र। तो यार मुझे अश्विन, तो आई कैनॉट लेट गो ऑफ दिस अश्विन एपिसोड यार। व्हाट अ कॉमेडी, व्हाट अ थिंकर। This Ashwin episode only. Everything else is just filler. Middle-handed legit। batsman. तो इसीलिए वॉशिंगटन सुंदर आ गया बीच में, फिर देखा शुभम गुबे आ गया बीच में, फिर कभी देख रहा हूँ अक्षर पटेल आ गया, वो केएल राहुल तो नंबर 12 पे आया बीच में, मैं भूल गया वो बाल बाल बड़ा करके ऐसे करके, ये लगा ये कौन बॉबी देओल आया क्या, फिर देखा नहीं बॉबी देओल तो नहीं, ये कौन आया है, फिर देखा पहला बॉल आउट होकर चला गया वो, बहुत जल्दी जल्दी आया था, बहुत जल्दी वापस गया वो, बहुत जल्दी। केएल राहुल वो, फिर सिराज आया बीच में लास्ट में बैटिंग करते हुए, वो विव रिचर्स टाइप चिंगम चबाता चबाता, कोहली टाइप स्ट्राइक लेते हुए, स्टीव स्मिथ टाइप का डिफेंस भी लिया ऐसा, और एलबीडब्ल्यू हुआ उसके बाद। बेस्ट था कि उसने ना एकदम स्टाइल से डिफेंस किया, फिर ना वो 2 स्टेप आगे रन लेने की कोशिश किया, जबकि बॉलर वहीं पे, और बॉलर के पास बॉल चला गया है, अरे तू किधर जा रहा है। अबे ये सब काम तो अश्विन करता है, बॉलर को चकमा देने के लिए कि मैं तेरे तरफ मारा हूँ तो ओवर हो जाएगा। सिराज ये सब नहीं सोच रहा था, उसको क्या ना, उसको प्रैक्टिस में किसी ने बोला है कि चबाते हुए जाना च्युइंगम, कोहली के ऐसा स्ट्राइक लेने का, और बॉल टुक मारते ही पहले ही भागना चालू करना, इंटेंट दिखाना है तेरे को। येड़े को ये भी समझ में आता, सीधा चला गया बॉल, भाई तू बॉल की तरफ ही जा रहा है, तू भी जा रहा है क्या बॉल लेने, ये समझाना पड़ा, बॉल तेरे को लेना नहीं है भाई, वो बॉलर उठा लेगा, कोई बात नहीं है, तू पीछे आ। फिर नेक्स्ट Oh, बॉल हो गया, shit. नेक्स्ट बॉल वो रन आउट। ये है सिराज, वो अलग ही मूड में गया है, ऐसे मूड में तो हम लोग श्रीलंका जाते हैं कि यार श्रीलंका चलते हैं, गॉल में वो बैठेंगे, वो पहाड़ के ऊपर चढ़ के राम वाम पी के मस्त एकदम देखेंगे मैच, ये सब बात हम लोग करते हैं। सिराज ये कर रहा है, ही इज लिविंग दैट ड्रीम, And getting paid for it while at it. he played for it। like Nitin Sundar, I don't know what is he doing, he should have played for Indian team, because he always wanted to go to Gaul and watch, and watch cricket drinking rum। यही चीज कर रहा है सिराज भी, he is watching cricket, बस वहां पे जाके। जनरली सिराज डज दिस इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, हर जगह जाके वो क्रिकेट देखता है, ओडीआई या टी20 में तुम उसको खिलाओगे तो, और इंडिया में टेस्ट मैच खिलाओगे तो, सिराज सेम, ही बिकम्स अ स्पेक्टेटर। तो बढ़िया है, आई थिंक इट्स अ ग्रेट टीम। बट कमिंग बैक टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई थिंक अगेन, संजू सैमसन को लेके गया है कि नहीं गया है, कि उसका पासपोर्ट खराब हो गया, क्या हुआ। हाँ यार, I don't think he is there in the ODI squad. So मतलब I he's think he not even was. there in ODI squad for fielding drills. मतलब सोच लो। मामू क्या यार हुआ यार उसका। संजू सैमसन का बहुत क्लियर है, मतलब एकदम क्या है। क्लियर है। अगर अगला आईसीसी टूर्नामेंट इंडिया का वनडे इंटरनेशनल्स है, तो इंडिया उसको सारे T20s में खिलाएंगे। और अगला वर्ल्ड आईसीसी टूर्नामेंट अगर T20 है, इंडिया उसको सारे ओडीआईस में खिलाएंगे। So he is like one of those guys who is very important, like to consolidate India's presence in all other formats other than the formats that is relevant in the next 1 year. मैंने ये चीज, सॉरी मैं थोड़ी थोड़ी सी कॉर्पोरेट हाँ हाँ, स्ट्रैटेजी करना चाहता हूँ, ये वाली संजू ब्यूटीफुल सैमसन। ब्यूटीफुल Because of जीरा। course. संजू सैमसन इज द सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इन अ कॉर्पोरेट ओके सेटअप। ओके। तुम देखना, एक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो सबसे बेकार चीज पे काम कर रहा होता है, एसवीपी। वो कभी भी अच्छा चीज पे काम नहीं करता। दुनिया के सारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जो है, क्योंकि उन लोग को क्या है ना, ऑनररी मेंबर बना के रखना है, यार ये आदमी जो है इसको निकाल नहीं सकते, निकाल दोगे तो यार बेचारा उसको बहुत पैसा देना पड़ेगा, तो और इसको किसी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पे डाल दोगे तो प्रोजेक्ट को ठल्ला कर देगा, बेकार हो जाएगा। कोई नया इनिशिएटिव पे दे दोगे तो बेकार कर देगा ये आदमी, क्योंकि एज हो चुका है इस आदमी का। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं जनरली जनरली दे आर एजेड, they have passed their prime, actually they never had their prime, वो प्राइम नंबर टाइप प्राइम पर रेयर है। तो वैसा लोगों का फिर तुम क्या करोगे कंपनी में, तो तुम उसको देते हो ऐसा एक इररिलेवेंट सा प्रोजेक्ट पे, तुम लग जाओ यार, तुम लगे रहो दिन भर,
और बड़े बड़े मेल लिखो सबको और आगे बढ़ाओ ताकि तुम एसबीपी से ईवीपी, एएसबीपी, एसएसएस, ट्रिपल एसबीपी, सुनील गावस्कर वीपी, कुछ भी बन जाओ। तो सुनील गावस्कर लगता है VP। कि सैमसन भी जो है वो हमारा एसबीपी है टीम का, कि तुम उसको जो है अब उसको भाई तुमने तुमने उसको खेलने का मौका नहीं दिया, अभी खेलने का मौका नहीं दोगे तो बुरा, तो कोई बात नहीं, पर तुम उसको मेन टूर्नामेंट में खिला दोगे तो गेम ओवर कर देगा वो आदमी अकेला। तो तुमने उसको अलग टूर्नामेंट खिला दिया, सही है। मुझे लग रहा है इसमें एक वीजा का भी चोपा है ये श्रीलंका वाले टूर्नामेंट में, क्योंकि श्रीलंका वाले टूर्नामेंट में संजू को खिलाना चाहिए था, क्योंकि श्रीलंका टूर्नामेंट का जो आउटकम होता है उसका कोई रेलेवेंस नहीं है नेक्स्ट नेक्स्ट टूर्नामेंट में। अगर इंडिया भी ऑस्ट्रेलिया खेलने आता, ठीक है, और श्रीलंका में कोई भी अच्छा परफॉर्म करता, वुड यू हैव टेकन दैट इनटू कंसिडरेशन? द आंसर इज नो। श्रीलंका में तो तुमने किया होगा, कोई बात नहीं है, डजंट मैटर। तो संजू को खिला, फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव आई वाज सेइंग कि संजू को खिला देना चाहिए था ये श्रीलंका वाले टूर्नामेंट में, क्योंकि इररिलेवेंट था, उस सेंचुरी भी डबल सेंचुरी ट्रिपल सेंचुरी मार लेता ओडीआई में, फिर नेक्स्ट मैच में ड्रॉप कर देना था उसको। I think that this was a perfect opportunity to deploy the SBP strategy on Sanju, because this is the most irrelevant project that is currently ongoing. He should have been part of this project. Yeah, I think it is also critical to note that in this context, like India's after this tour, India's next cricket is against Bangladesh, and the first test match is at Chennai. Test match है क्या? So, so तो फिर उसमें Iman test Pandey, match what are your views around like बांग्लादेश this क्रिकेट, series happening, हाँ होगा कि or नहीं? like will तो नहीं, आई थिंक विल स्टिक टू टेस्ट मैच हैपनिंग होगा। टेस्ट मैच अब तो और नहीं होगा, कैसे बाहर क्रिकेट खेलने आ जाएगा अभी? वो अबंडन हो गया, सॉरी, इनवैलिड क्वेश्चन है, क्योंकि वो टेस्ट मैच और होगा नहीं। अभी जैसा भी लेके नहीं आ सकता, उसका बड़ा बाप अमित शाह जो है, अमित उसको बोलेगा, ए जे, अभी इन लोग को खेलने के लिए मत बुला रही गिड़े, तू खाखड़ा खा चुपचाप बैठ, किसी और को बुला, क्या कर रहा है भाई तू, उधर उधर आग लगेला है, इधर मारा मारी चल रहा है, और तू इधर अपने उन लोग को बुला रहे, तमिलनाडु में बैठ के खेलेगा, पागल है क्या? तेरे को अगर बांग्लादेश का क्रिकेट टीम से किसी को लेके आना है इंडियन टीम में, क्योंकि अपने यहाँ बहुत घटिया प्लेयर्स हो गए हैं, तो बात करते हैं। जैसे अपने मुस्तफिजुर चाहिए क्या, पेसर के नाम पे स्पिनर चाहिए क्या? वो एक ऑप्शन है। सेकंड, तुमको ऑलराउंडर्स का बहुत दिक्कत है, साकिब चाहिए तो बताओ, ऐसा चीज कर सकते हैं। तो आई डोंट थिंक देयर इज गोइंग टू बी टूर्नामेंट बिटवीन इंडिया एंड यार बांग्लादेश इन आई एम जस्ट थिंकिंग इफ शाकिब कम्स एंड प्लेस TNPL लाइक ही प्लेस ढाका प्रीमियर लीग, मजा आ जाएगा मजा आ यार, जाएगा, मतलब मजा मजा आ आ जाएगा। जाएगा। अश्विन के पास जाके उसके विकेट को लात मार के गिरा देगा, ब्यूटीफुल। और फिर फिर अश्विन जो नेक्स्ट डे बोलेगा। अश्विन नेक्स्ट डे दाढ़ी बना के आएगा विकेट वाला, बता, 3 स्टंप। उफ। तो क्वेश्चन रियली कि अगर टेस्ट मैच हुआ, अरे एक न्यूजीलैंड के साथ जो इंडिया खेलेगा उसमें अश्विन खेलेगा आई थिंक, तब तक अश्विन T20 और ओडीआई खेलता रहेगा। और एंड इफ बांग्लादेश इवेंचुअली एंड्स अप ट्रैवलिंग टू इंडिया, तो फिर जैसा फिर रहेगा नहीं, फिर He's जैसा predicting demise of Jaisha because Bangladesh will turn up. Nice. गलती से आ गया वो मानो। जैसे आज शेख हसीना आई थी, कौन सा फ्लाइट उड़ते हुए अचानक से अगरतला में लैंड कर गई वो। नहीं दिल्ली में लैंड किए दिल्ली फाइनली, भी पहुंच गई। और एक टी दिल्ली पहुंच गए, और एक T20 मैच इंडिया बांग्लादेश दिल्ली में भी है। दिल्ली में तो खेलना पॉसिबल, कोई बात नहीं है, वहां पे कौन अंधेरे में धुएं में खेल रहा है, बांग्लादेश है, कोई बात नहीं है। तो खेल रहा है पब्लिक, कोई ना कोई 2 टीम बैठ के खेल रहा है, पब्लिक को भी नहीं पता कौन आया है, प्लेयर्स को भी नहीं पता किसके अगेंस्ट खेल रहा हूँ, तो चल रहा है बढ़िया। वो पॉसिबल है, दिल्ली वाला पॉसिबल है, मुझे लगता है चेन्नई वाला नॉट, मुश्किल है। From Colombo, we move back to the tournament that we have all missed but won't admit we have, and that is the Indian Premier League. So last week, the BCCI and the IPL franchise got together to discuss what needs to be done with the IPL, and especially with respect to the mega auction. There were rumors of a fight between Shah Rukh Khan and Nes Wadia at this meeting, where apparently the Kings 11 owners did not want any retentions whatsoever, and Shah Rukh Khan was making a pitch for like as many retentions as possible.
Our special correspondent Nishan Biswal has also been keeping track of some of the rumors related to players ahead of the main auction. So Bisi, like what's cooking there with Before, respect to I want to ask opinions on certain things which were discussed by the owners, first of all. So, anyways, I don't understand the difference between mega and mini auction, so whatever. But one of the important things which every IPL owner came up with was banning players who don't turn up for playing the tournament after turning up for the auction. I want immediate thoughts. I am in complete favor of. I mean, I think it is a subjective one. Why? I don't believe like a blanket ban is the so a player may genuinely not be in the frame of mind to represent like a franchise or like closer to the tournament. I think we should all appreciate that the auction takes place in most years in December. The tournament proper starts in May, June, etc. Um, June and tak sometimes, I mean, okay, maybe it starts April, May, June. Yeah, I think it pretty much goes on till June. Look, if a player is not interested, I don't think it is in the franchise's best interest to have the player along. Like, you can't like force anybody to be around for these reasons, to be honest. but you're then throwing the plans off, like completely off track, right? I mean, you would have हाँ तो bid. तो if you think of it, ये किस प्लेयर पे बेट लगाना है that should just be on the stats, right? It should also be on the conditional probability है वो, the probability of this player being available. Then you look at stats. तो पहले वो मैथ लगाओ ना. हैंक ने सब हम सबको पढ़ा दिया है. बेसिकली तुमने पढ़ा नहीं है सब, लगता है हैंक ने हमको पढ़ा दिया है सब चीजें कि प्लेयर्स का जो प्रोबेबिलिटी देख लो खेलने का, उसके घर का सीन क्या है, वो कौन से कंट्री से है. आई बांग्लादेश का तुम कितना बड़ा बुद्धू होगा अगर तुम्हें बांग्लादेश का प्लेयर को अपने टीम में ले लेगा. हाँ भाई कैप्टन बना, मैं साकिब को कैप्टन बना दिया. मैंने जो है बैठ के अपना ये तौहीद हृदय को ले लिया अपना बेस्ट ओवरसीज प्लेयर. वो तौहीद हृदय उधर अभी सकीना शेख हसीना है घर पे बैठ के उसका वो ट्रेडमिल में भाग रहा है. ठीक है, तो तुम उसको कैसे ले सकता है. तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्लेयर टर्निंग अप इज इक्वली इंपॉर्टेंट नॉन, एंड दैट इज वन इंपॉर्टेंट स्टैट्स. उसके बाद दैट इज द टॉप ऑफ द फनल, एज मैनेजमेंट गुरुज विल से, टॉप ऑफ द फनल में प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लेयर प्लेइंग कितना प्रोबेबिलिटी है. उसके बाद लोअर फनल में आकर तुम उसका कन्वर्जन देखो कि यार वो प्लेयर क्या स्कोर बनाया है, कितना अच्छा प्लेयर है, स्ट्राइक रेट क्या है, विकेट क्या है. तो यू कैन नॉट जस्ट टेक अ प्लेयर कि वो अच्छा प्लेयर है बोल के. अच्छा प्लेयर को मतलब नहीं होता है इन सेक्लूजन, राइट. तो डेटा को देखने का तरीका होना चाहिए यार. किसी कम ऑन यार, हैंक ने इतना सिखाया. Come on. I duly apologize. I think we should be more cognizant of the right way of choosing a team or selecting Correct. players. My due apologies to Melbourne. चलो ठीक है. हाँ, मतलब कल तो तुमने अफगानिस्तान का प्लेयर ले लिया, ठीक है. अभी तालिबान को मन किया कि नहीं जाएगा कल से तुम. हमारा इंटीरियर डिपार्टमेंट जो है, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स डिपार्टमेंट ने आपको बोला है कि आप जाएंगे नहीं जनाब. तो वो कैसे जाएगा. आप कितना भी अच्छा प्लेयर हो रशीद खान, आई एम सॉरी रशीद, पर तुम नहीं जा सकते. वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो उसका है जाएगा, वो बेचारा रशीद खान नहीं जा सकता. तो डजंट मैटर, उसको गूगली रहेगी, गूगली उधर ही रह गया उसका बेचारे का, नहीं हो पाया. Started. चलो बढ़िया है. Understood on that note. Okay. No further discussions on player retentions. चलो ठीक है. एक player retention which बनता है discuss करना, ठीक है ना. Iman, you will like this because this is related to Tamil Nadu after all. CSK wants MS Dhoni to be retained as an uncapped player. And for those who don't know, Dhoni retired how many years ago now? 7 years? 7 साल हो गए? 2019. अच्छा 5 साल हो गए ऑलमोस्ट. हाँ. सो अगले साल के बाद, सो देयर वाज एन ओल्डर रूल. 7 साल हाँ, बोल के 7 साल. निकाल. थाला फॉर अ रीजन ना आफ्टर ऑल. हाँ ठीक है, करेक्ट. तो देयर वाज अ रूल अंटिल 2018 आई थिंक, वेयर अ रिटायर्ड प्लेयर post 5 years of retirement can be considered as an uncapped player, and they want that rule to be brought back just so that Dhoni can be retained as an uncapped player. नहीं, फेयर है. इसमें क्या गड़बड़ है. वो तो कैप भी नहीं दे रहा है. एक खर्चा कम हुआ उसका कैप देने का, है ना. कैप का खर्चा आता है, वो भी नहीं दे रहा है. देयर वाज अ रूल व्हिच एग्जिस्टेड, सो दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग इट बैक. तो धोनी को वो एज एन अनकैप प्लेयर रखेगा तो अच्छा है ना. इट्स गुड फॉर क्रिकेट. तमिलनाडु में लोग आके फिर मैच देखेगा, थाला थाला करेगा. डिंडिगुल थलाप्पाकट्टी का प्लेयर्स आएगा 2-3. नहीं तो क्या होगा,
तुमने अगर धोनी को नहीं लिया अभी सीएसके, तो सीएसके को क्या करना पड़ेगा? दे डोंट हैव अ चॉइस बट टू अगेन टू बोल्स्टर द तमिल सेंटिमेंट, दे हैव टू टेक एक्शन इन देयर टीम। कितना डिजास्टर हो जाएगा। वो ओपनिंग आ जाएगा आदमी, वो कैप्टन बन जाएगा, वो बॉलर भी बनेगा, बैटिंग भी करेगा, कीपिंग भी करेगा, कैप्टनसी भी करेगा, सब कुछ करेगा वो आदमी ऐशन्ना। तो just to keep him away, I think, and to still keep the overall brand value of CSK up in the Tamil audience, I genuinely think that MSK धोनी बोल दिया मैंने। क्या हो गया भाई? वैसे धोनी। नींद आने लगता है। हाँ, एमएस धोनी रखना चाहिए, ऊपर से कैप भी नहीं दे रहे, तो आई डोंट थिंक इसमें कुछ गलत है, अच्छा है। बेंड द रूल्स टिल द रूल्स कैन बी बेंट, तो सही है, इट्स फेयर। अभी जैसे कि, एंड व्हाई एम आई सेइंग ऑल ऑफ दिस, राइट, नॉनसेंस बात बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे को लगता है कि केकेआर में सौरव गांगुली को लौट के आना चाहिए, तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ सब चीजें। अच्छा, एज अ अनकैप्ड प्लेयर। अनकैप्ड प्लेयर, हाँ। वो अनकैप्ड ही था लाइफ लॉन्ग। हैंडीकैप्ड प्लेयर है वो, अनकैप्ड नहीं कह सकते, एज एन हैंडीकैप्ड प्लेयर वो आ सकता है गांगुली अपना टीम में, कोई बात नहीं। Spoken like a true Ganguly fan. Speaking of left-handers, Yuvraj Singh rumored to join GT and replace Ashish Nehra as coach, which is fine Where because is Nehra going? I've heard like he is leaving. Like, is he going to go back to the cricket box, or like he's going to like take up, or he's going to go and play some Legends League or something like that? अरे I think Nehra के लिए there will be suitors यार, for sure. I have no doubts. क्योंकि he's done wonders in that 2 seasons with GT and आई थिंक नेहरा विल गो टू केकेआर। नेहरा फिर से अनकैप्ड हो जाएगा। अनकैप्ड है वो भी, हैंडीकैप्ड है बेचारा। नेहरा के साथ तुमको बचपन वाला जोक पता है ना, नेहरा नो बॉल क्यों करता है? क्यों क्यों? करता है? नहीं पता। क्योंकि नेहरा रहता अंदर है पर उसको दांत बाहर आ जाता है, इसीलिए। Oh, He's- so you एक सेकंड, नहीं want नहीं नहीं Ganguly नहीं। as non-playing captain and Nehra as coach, and हाँ, it will suit both parties. Oh, okay. both parties, कोई हाँ, बात क्योंकि नहीं है। गांगुली एनीवेज अदरवाइज विल प्ले गेम्स लाइक ही डिड विद पॉन्टिंग, उसको निकलवा दिया हम्म इधर गांगुली उधर को के। नेहरा रखेगा तो प्रॉब्लम नहीं है, साइड में रहेगा उसका। नेहरा घूम रहा है, क्योंकि गांगुली को जाके मेहनत नहीं करना, उसको बस नेतागिरी हाँ, करनी। करेक्ट करेक्ट। नेहरा सब काम करेगा, मैच के टाइम पे भी वो बाउंड्री लाइन के साइड में बैठ के बॉलर को टिप्स देगा, सब कुछ करेगा गांगुली हार्दिक के को तो लिए। वही जम रहा था ना कि काम कैप्टेंसी के लिए वो जाता था टॉस के लिए, ही वुड टर्न अप फॉर द टॉस एंड नेहरा वुड करेक्ट, बी द वन विल बी सेटिंग द फील्ड एंड देन आस्किंग फॉर बॉलिंग चेंजेस और पर ही विल बैटिंग। नॉट बोल, नेहरा विल नॉट बोल, दैट्स द ओनली कैच, कि सैडली। नो बॉल कर देगा वो। वामो, वेयर इज केएल राहुल हेडेड? Let's decide once KL and for all. Rahul is KL Rahul is going to RCB only. There is no two ways about it. Next RCB captain is KL Rahul. कैप्टन सीधा? Ah, he will go like be captain. Like Abhi RCB will not have half Duplessis. So KL Rahul will be keeper captain and मेंटर maybe भी like बना, one down मेंटर batsman. मेंटर भी बना दो उसको, केएल राहुल का एज कितना है? 34? 32 साल का है, 32। तो 8 साल और खेलेगा वो मिनिमम, नीट आईपीएल हाँ। हाँ 7-8 साल मतलब तो खेलेगा, राहुल और 8 कैप्टन साल रहेगा और आरसीबी। कोहली वाइस कैप्टन रहेगा। ओके, मतलब और 8 और साल आरसीबी कुछ नहीं जीतेगा, मतलब 15-16 साल नहीं ऑलरेडी नहीं, हो। अनदर 8 years आरसीबी विल नॉट क्रॉस 150 in 20 overs क्योंकि अब केएल राहुल बैटिंग कर रहा है तो ही विल स्टेबलाइज 24 ऑन टॉप। साल से आरसीबी कुछ नहीं जीतेगा। हाँ। ये तो माइक्रोसॉफ्ट का वो एसबीपी से भी खराब हालत है यार, बहुत घटिया हाल हो गया यार, 24 साल से प्रमोशन ही नहीं हुआ बेचारे का। माइक्रोसॉफ्ट में एटलीस्ट हो जाता है 20-20 साल में एक बारी, तो 24 साल से कुछ नहीं हो रहा है। लिंक्डइन में क्या लिखेगा आरसीबी वाला यार, मुझे लगता है उनको सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो आरसीबी को केएल राहुल को लेने के बाद अपना लिंक्डइन हैंडल डिलीट कर लेना चाहिए, क्योंकि लीडरशिप पे कुछ लिख ही नहीं पाएगा वो बेचारे। बी बोल्ड ये सब जो बोलता है अपना स्टाइल, क्या बेचारा 24 साल से नहीं जीता हूँ, यस आई एम बोल्ड एंड यार आई एम नॉट वन एनीथिंग फॉर 24 years। केएल ये राहुल को कप्तान कैप्टन बनाना इज लाइक बीइंग बोल्ड ना। करेक्ट। हाँ, BOLLED ना, बोल्ड हो गया वो, क्लीन क्लीन बोल्ड हो गया। क्लीन बोल्ड है। केएल राहुल बढ़िया प्लेयर है, केएल राहुल। तो इंडिया का
I think this is the best part about India. Like a player like KL Rahul, suited for Test cricket, is not in the Test team, but is in contention for ODI team, T20 team, T10 team. कल T5 आएगा उसमें भी आएगा. तो Bhai, सही he है. is the test match wicket keeper now. कौन से टेस्ट मैच Overseas में? test, पंत अच्छा को South कुछ Africa में he was the keeper, right? हाँ, ठीक है अभी ठीक. क्या होगा अभी पंत आगे का? गोइंग फॉरवर्ड बताओ यार. गोइंग फॉरवर्ड तो पंत इज बैक. देयर इज नो वे यू विल नॉट प्ले पंत. पंत अगर Going नहीं forward, है, there is no way you will not play KL Rahul also. हाँ, सो even in बेसिक. अरे यू गाइस आर गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया, यू विल वांट टू सी केएल राहुल एज अ कीपर और पंत एज कीपर. सिंपल क्वेश्चन, मुझे बता दो. इतना पैसा खर्च करके जाओगे, वीजा वीजा लगाओगे, हैंक के साथ रहोगे, पंत कीपर Have रहेगा. you have you seen Pant's keeping in the last 3-4 months? नहीं, देखो, What young. पर केएल राहुल कैसे खेलेगा टेस्ट टीम में पंत होने के बावजूद? नंबर 4 दोनों हो गया खेलेगा. शायद. तो फिर केएस भारत को भी ले लो, 3 हो जाएगा. संजू को भी ले चलो बेचारा. टोनी का तो वीजा लग ही रहा है, तो एक मलयाली के साथ एक और मलयाली को ले जाते हैं हम ऑस्ट्रेलिया को. 2 लोग चले जाएंगे हम ऑस्ट्रेलिया. अरे सबके लिए जगह है यार. ओपनिंग करेगा रोहित और यशस्वी. यशस्वी. हाँ. वन डाउन खेलेगा गिल. शुभमन गिल. 2 4 पे डाउन कोहली. खेलेगा कोहली. कोहली. हाँ, 3 that's it. डाउन खेलेगा राहुल. 4 डाउन खेलेगा पंत. खत्म, बस सॉर्टेड है बस. उसके बाद हो गया ना. उसके बाद मिडिल हैंडेड बैट्समैन आ जाएगा, क्योंकि उसका प्रमोशन हो गया होगा तब तक. के बाद ऐसा अश्विन और जी. हो गया ना, सबको फिट करा दिया. बीच में जब पंत नहीं था तो कौन खेल रहा था? भरत. नहीं, अपना अपना स्टार विवियन रिचर्ड्स, ओरिजिनल विवियन रिचर्ड्स, बाइकुला बनियन वाला, अकॉर्डिंग टू मैक्स. हाँ, अय्यर से तो बढ़िया ही रहेगा केएल. अय्यर से. अय्यर ने क्या किया है श्रीलंका में यार. बाइक क्लब बनी. भाई से ये भैया भाई. तो चलो, कमिंग टू द लास्ट मूवमेंट विद इन द आईपीएल. अभी रोहित शर्मा कहाँ जा रहा है, और उसके होते, इन द वेक ऑफ हिज मूवमेंट, व्हाट हैपेंस इनसाइड मुंबई इंडियंस. रोहित शर्मा the सीएसके. latest rumor is that like Hardik Pandya himself is going to be let go by Mumbai Indians. No? Beautiful, no? Amazing franchise. So apparently Yeah, Hardik Hardik Pandya will Pandya be is let not- go, and Surya Kumar Yadav will be made the captain, because Mumbai Indians is like, हम क्यों दिमाग लगाएं, सिलेक्शन कमेटी ने लगाया तो कुछ सही ही किया होगा. So we'll make Sky the captain, let go of Hardik Pandya, or maybe retain Hardik Pandya like Rohit was retained, so that he plays under Sky. But where does this guy go, Rohit? CSK? I He think can no. Rohit will go to Delhi Capitals. और LSG, क्योंकि LSG में तो void हो गया ना बड़ा सा. नहीं, he'll go to Delhi. LSG में जाएगा. अरे अपना एक और इंडियन कैप्टन है ना. कौन? अंबती रायडू. हाँ यार, बुमराह भी तो है ना. अच्छा, बुमराह also leave मुंबई इंडियंस. शाबाश. ओके, वेरी नाइस. चलो, सॉर्टेड है फिर. तो क्या आकाश अंबानी विल ओपन बैटिंग और बॉलिंग? तो बैटिंग से सही बोला. बैटिंग बैटिंग ही ना. ठीक है, चलो. हाँ. बॉलर आजकल बैटिंग कर रहा है. तो बैटिंग okay, sad note to end the podcast. I think like came as a shock to all of us earlier today. Untimely like passing away of Grant Thorpe at the age of 55. Like hugely underrated batsman in his days. Like some of the tributes pouring in are representative of how highly he was rated as a batsman. Like you had Wasim Akram calling him the best left-hand batsman he had ever bowled to. And besides being a fantastic batsman, also like earned his stripes as a coach with the England team, legend with Surrey. So really sad to note. I mean, my memory of Grant Thorpe will be a game which Iman Pandey will well remember. I think it was the 1999 World Cup India-England game, which was spread over. आउट हो गया था तो. Yeah, and that ball was missing the seventh stump also, basically. Horrible बहुत decision. बढ़िया. Like, so
Yeah, very untimely demise. So that's a wrap on episode 135 of the Bits and Pieces podcast. Um, Also a rap we on also a rap on the knuckles on all Bengalis who think that Saurav Ganguly is the best left-handed batsman. Because it's not. It's Thorpe. आज ही पता चला so बंगालीज को. listen, subscribe to our podcast on your favorite podcasting platforms, and we will be back again next week talking about the all important third ODI between India and Sri Lanka. Till then, bye and take care. TV umpire to director, we have a player review. Can we rock and roll, please?